Fantastic, guys. Everyone, very warm welcome. It's fantastic to have you all here. थोड़ा सा delay हो गया, but meanwhile we kept on playing the Hall of Fame, and you know the Mumbai traffic. So it's always fantastic to see you guys. Sunny, Ramakant, Gagan, Akshay, Gaurav, every one of you. It's lovely, Preeti. And I'm just checking if you are able to hear me out loud and clear. People who are there on YouTube, are you able to hear me out? Can we share across the link very clearly on the YouTube also with every one of them? And I'm just checking. यहाँ पर मैं link share कर रहा हूँ. People who are there on YouTube, they can join me on the Zoom platform for clarity and for understanding about markets. It's going to be very, very simple. ये link मैंने share किया है. I'm just going to pin it across. Director साहब, please YouTube पे भी active रहे. Lovely to see you all here, everyone. And we are 91,400 on YouTube. Fantastic, guys. It's amazing. So voice echo हो रहा है, तो you can just try and rejoin. I'm not sure. Are you able to hear me out loud and clear, every one of you? I'm just checking if you are able to hear me out properly. And markets are doing wonders, and the levels are working like magic. You remember a level that I tweeted last week, 24,400 levels? याद है क्या किसे? 24,400 levels की हमने बात की थी. What is the high that Nifty made today? Mehul, Sanjay, Gaurav, Prakash, what is the high Nifty made today? 24,400.95. That's the exact level and high that you can see made in today's market movement. And it worked super. Can you see that? How these levels work? And मैंने एक tweet भी किया था that around 24,120 के आसपास छोटा सा tweet था for a scalping move towards 24,250. When Nifty was at the day lows of 24,120. And the reversal happened for the move towards 24,245 from there. And that also worked. So, and these are the levels, and this is the magic of how it works. 24,103 is also the Gann square of 9 level. And these levels work. Do you want to see the Gann square of 9 levels again? देखना है क्या? And before I move on, I just want to know, यहाँ पर do you think these short videos, the tweets that I am doing, is it helpful, is it useful? और आज Friday at 4 नहीं करके हम Thursday at 4 इसलिए कर रहे, because I am addressing tomorrow at NISM Institute. NISM is National Institute of Securities Management. We have jointly launched a course on technical analysis. Yes, तो अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, like research analyst certification series 15, NISM derivatives module, वैसे ही एक technical analysis module भी launch किया है. And उसके टेस्ट पेपर्स मैंने लिखे. So आप सभी जो अटेंड करें, I'm sure if you take that exam of NISM, you will come out with flying colors, because you have learned it from me, and it has been something something that will interest you of. So वो है, and next week I'm speaking at NIBM, National Institute of Bank Management, which is in Pune, where I'm traveling to speak there. There are bankers from India, from various PSU banks, from private banks, Bank of Bangladesh, from different parts of country, neighboring countries, who will be coming to learn about wave theory, Elliott wave. So it's always going to be super. And यहाँ पर मैं बहुत ही क्विकली मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में. जस्ट अ मोमेंट. द वीडियोस आर सुपर एंड यूजफुल. फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पर in a second. Okay, and we had a wonderful weekend on options mantra. Are there Trishul participants here? Are there participants from options mantra, Brahmastra wale log hai kya yahan pe? I'm just checking with them. All of you are there with me? Okay. आवाज echo हो रही है for some reason. I'm not sure. Is my voice audible to everyone, or is it echoing? Only for few people it's echoing. I think you need to get up. That's why it's echoing. शुरुआत करते हैं मार्केट को देखने की. ये चार्ट आप देखिए. This is the chart, and how Nifty has been behaving. Let us just look at it in a very simplistic price action format. Okay, यहाँ पर सिंपल सा साइंस मैं आपसे पूछता हूं. ओवरऑल ये नीचे जो इंडिकेटर है, दैट इज ए के इंडिकेटर जो नीचे मैंने प्लॉट किया हुआ. फ्रॉम दिस लेवल्स
Can I say the overall trend is on the buy side? ठीक है. Weekly trend क्या है? If you look at the weekly trend, can you see that how fantastically the level of 22,200 has worked so damn well. One level that has worked so precisely that you can clearly make out from the chart here. Now, I want to also check after that we have reversed on the upside, which is the level where maximum volumes of big players have taken place. Do you want to see that level? कहां पर बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई थी पास्ट में? Why is that information important? I'm asking you. Why is that information important? Why players that created positions in the past is an important information even now? कोई बताएगा क्या? ऐसा क्यों? जो पास्ट में पोजीशंस बनाई हुई वो अभी भी क्यों इंपॉर्टेंट है? Anyone? Think and answer. ओके, सोचिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो देखना हमें. पास्ट इंफॉर्मेशन. इफ यू लुक एट इट in a very, very simple, simplistic way, we are seeing this data because that's the area where someone got trapped. That's the area where some big player got trapped and we want to see that area. So in order to see that area, we should look at which concept. वीकेंड पे किया था, कौन सा कॉन्सेप्ट किया था? कौन बताएगा? कौन सा कॉन्सेप्ट किया था हमने? क्या दो चीज देखनी है? Just to see that. Just to see that. What two things we need to put on the chart? देखते हैं. I'm sharing my another screen here. You people have to participate, huh? We need to put not KC, KST. We need to put OY profile and volume profile. So if I go and put OY profile over here, you can clearly see that there is a very sharp rise. दिख रहा है? ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल दिख रहा है यहां पर. On the open interest profile, can I say that there is a very, very sharp rise at 24,000 levels on the put side? मतलब कन्विक्शन आ रहा है ट्रेडर्स को 24,000 को डिफेंड करने के लिए. That data can change very fast, but now the conviction is coming. 24,500 call sellers are also getting active. मतलब इतना आसान इस लेवल को निकालना नहीं होगा क्योंकि 24,500 call sellers are active, 24,000 put sellers are aggressive and 25,000 तो बहुत ही मुश्किल वहां पर. अभी ऐसे सिनेरियो में what do we make out is basis of the Fibonacci retracement. Fibonacci is a very, very powerful method that can help us. So I'm combining these along with my Fibonacci trading tool. So if you go on the left hand side, where is my Fibo gone? You will be able to see yahan par sacred geometry and we can clearly see Fibo retracement here. After seeing the Fibo retracement, these are the levels. So we are now at a 50% retracement level. And 61.8% level coincides with something very important. कौन बताएगा मुझे? Why 24,728? किसे याद है क्या? भूल गए? निफ्टी 22,000 आ गया तो 24,728 को भूल गए. मार्केट दिखा रहे अपनी स्ट्रेंथ, वो बता रहे हैं यार 24,728 द गेन मैग्नेट. इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो आप? ज्यादा दूर नहीं हूं मैं. That's what the GAN magnet is trying to show. We are not very far away. 24,728 is the GAN magnet. ठीक है, नीचे का 24,103 है. 103 या 102, 24,102 या 103 है, वो लेवल क्रॉस हो गया. Now we are headed towards 24,728. That's the GAN magnet. And that is also very important because why? Because along with that GAN magnet, we have a very crucial 61.8% Fibo. Plus, there is a very big volume profile also created at that level. So, Nifty GAN magnet
of 2470.28 is again nearing. This is also the level of 61.8% Fibonacci retracement of entire fall. Will यहां पर नीचे में सपोर्ट किया 24,103. That's the support. And if you look at it, as long as 23,970 is intact, use dips to buy. यहां पर बहुत ही सिंपल वे से मैं बता रहा हूं आपको दी पावर ऑफ फीवो. And you know, majority of the traders are going to get trapped once we reach that level. Once we reach that level, it will look so tempting that we missed out the entire up move, and majority of the traders are going to get trapped at that level. वहां तक जाएंगे कि नहीं देखते हैं. वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं. समझ में आया ये चार्ट पे सबको? आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वी विल हेड टुवर्ड्स दिस गेन मैग्नेट. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. बट भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे. वी नीड टू लुक एट दीज कॉन्सेप्ट्स in totality and price action. That's the key that you have to look at it. कल ही मैं डिस्कस कर रहा था ब्रह्मास्त्र में भी. And overall, if you're looking at this chart, one thing that I want to show you on 1 hour time frame chart very clearly. I'm just going to remove this and I'm going to remove these levels. I want to add a cross volume profile. Volume profile I will add on a Nifty futures here. Once I add volume profile on Nifty futures, can you see the major volume? Do you remember, guys, we discussed about volume profile last week? Okay. And होता क्या है मालूम है? ऐसा होता है आपके साथ? I'm just reading up your mind. Do you feel the urge to trade even without a setup? नहीं नहीं यार, निकल जाएगा मार्केट, निकल जाएगा, अभी तो सेटअप नहीं है, लेकिन मेरे को मिस नहीं करना है. फोमो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. डू यू हैव दैट अर्ज? होता है क्या? किन किन लोगों का ऐसा अर्ज होता है? मुझे तो होता है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. होता है अर्ज यार, निकल ना जाए यार. ऐसा होता है. You know the difference between successful trader and someone who is losing money is what? I don't pay any attention to my urge. I don't care how much I want to enter the trade after Nifty is up by 600 points. I follow my process. इसी में तो लूट चुके शुभम लिख रहे. आई फॉलो द प्रोसेस. सो अगर आपको लगता है यार मुझे ऐसा अर्ज नहीं होता है, नहीं, सभी को होता है. व्हाट डू आई डू? यू नो, स्प्रेड बना लेता हूं, पुट बेच देता हूं, हेज कर लेता हूं, जस्ट टू, आई नो इट, जस्ट टू सेटिएट द अर्ज कि अगर गया तो हार्डली कुछ जाएगा, बना तो थोड़ा बन जाए. दैट्स व्हाई you need to know when there is an urge what you should do in order to avoid that urge. And when that urge is very strong, when you're missing out and you see everyone else is making money, that's what you are thinking. Hota hai? Everyone else, no one else is making money, only few are making money. Trust me on that. Everyone else is behaving as per their urge and they are losing money. That's why you are able to make money from there. And that's important. अगर समझ में आया तो this was a very very important part. If you understood what I said, it's very crucial. यहाँ पर. But if you have the right mentor, if you have the right learning, if you have the right education in terms of trading, right education मतलब सही तरीके से देखना भी आना चाहिए, otherwise you will have a game. Okay, चलिए अभी मैं ले चलता हूं आपको यहां पर डेटा दिखाने के लिए. ये डेटा दिख रहा है आपको? एक टाइम था जब ये लेवल देखते थे 24,728 में, वो बहुत दूर है, टाइम लगेगा. देखो भाव भगवान से कितना जल्दी आता है. दिख रहा है ये लेवल? ये फ्यूचर्स का चार्ट है, फ्यूचर्स है 24,813. तो स्पॉट पे क्या लेवल होगा, कोई बताएगा मुझे? 24,813 इज फ्यूचर्स लेवल.
स्पॉट पे क्या होगा, मैं ओआई प्रोफाइल हटा देता हूं क्लैरिटी के लिए। गाइस, स्पॉट लेवल क्या होगा? 24,728। वाओ, दैट्स द ब्यूटी। मतलब कैसे? डज द बिग प्लेयर्स, एफआईआईज, डीआईआईज आर लुकिंग एट इट, or there is something subconsciously everyone is doing, and the level is here. This 24,813 is nothing but 24,728 again spot. और कितने बार रुका? And this is point of control. I'll tell you what urge you will have, if at all prices go there, if at all यहां से कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, and then we will go there fast, sharp, quick. You might have a very strong urge to buy market here because it's natural. When prices are at 61.8% retracement, you have missed most of the trend. You will have an urge to buy there. When you have that urge to buy, you are going to get trapped. How to avoid getting trapped is to simply look at price action, look at the risk reward, and wave pattern. What is my wave pattern supporting, suggesting along with Fibonacci? Once you look at these concepts, the Gann square of 9, it will work. So Nifty volume profile shows big players activity has taken place near 24,728 levels. Multiple, you know, multiple hurdles over there. Ensure you do not get trapped. यहाँ पर. So it's very important to learn from your mistakes. So I'm sure you are learning from your mistakes and ensuring that you don't get trapped and do a lot of things. Okay, shall we go back on my trading view and go to Neo Wave? Neo Wave count किन किन लोगों को देखना है? देखना है क्या Neo Wave का count? There is no Friday at 4, huh? And this Saturday, do you want me to do a master class? लिंक शेयर करेंगे मास्टर क्लास की सैटरडे की. दिस सैटरडे 11 AM आप लोग हो अवेलेबल मास्टर क्लास के लिए? शेल वी शेयर द लिंक विथ एवरीवन? फैंटास्टिक. क्योंकि हमने ये वीकेंड किया नहीं था, वी वर हैविंग ऑप्शंस मंत्रा ट्रेनिंग, सो वी डिड डू इट. एंड आर यू गाइस देयर? ओके, सो लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट से विथ एवरीवन, एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन जूम, सो एंश्योर यू आर देयर विथ मी, एंड आल्सो यूट्यूब पे शेयर करिए प्लीज विथ एवरी वन ऑफ देम. ओके, लवली. एंड सर न्यू वेव काउंट बता रहा हूं मैं निफ्टी का. डेली चार्ट, वीकली वीकली बायस क्या है हमारा? वीकली बायस बाय में है कि सेल में, एज पर 3 कैंडलस्टिक रूल? क्विकली क्विकली, what is our weekly bias? Buy or sell? Buy. Done. Daily bias. बता, एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें बहुत जन रॉन्ग आंसर देंगे. ये बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है? दिस कैंडल, इज इट बुलिश और बेरिश? थिंक एन आंसर. दिस कैंडल इज बुलिश और बेरिश? थिंक एन आंसर. Think and answer. It's a bullish candle. It's not a bearish candle. We are not closed below prior low yet, and the high is above prior high. It's not red color. It's a bullish candle. It's a bullish candle. Okay. Now hourly trend पे जाके देखते हैं. Hourly trend देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है. I'm going to zoom in the chart. इसको निकाल देते लाइन को. Hourly trend. Is it bullish or bearish? यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे. Hourly trend कहने से it's bearish. नीचे आ गया था ये कैंडल, नीचे, not a single hourly close above, which means the hourly trend is down. Okay, so weekly is up, daily is up, hourly is down. In which direction you need to trade? Is it going to be an easy trend down, or if the hourly turns up, making money will be easy? If the hourly bias turns up, can I say the making money will be easy?
ब्रह्मास्त्र वाले कल मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, डू यू सी अ रिजेक्शन कैंडल? ब्रह्मास्त्र वाले कल वाले पार्टिसिपेंट मैं पूछ रहा हूं आपसे, यहां पर है क्या? श्रेयसी बताइए। दीपक, आपने ब्रह्मी लिखा है, उससे ही पता चल जाता है मुझे। इज दिस अ रिजेक्शन कैंडल? इज दिस अ रिजेक्शन कैंडल विच वी लर्न? है ना? फैंटास्टिक। सो डू यू नो वेर यू नीड टू एंटर नाउ? डू यू नो वेर यू नीड टू एंटर? स्टॉप लॉस, तेज लो, सिंपल है। Now, do you appreciate the importance of these smaller price action candles which we did in Brahmastra? समझ में आ रहा है आपको कितना क्रूशियल हो जाता है इस कैंडल का? क्लोजर नहीं चाहिए, क्लोज नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। वी हैव अ रिजेक्शन, वी जस्ट नीड एन एक्सेप्टेंस। वंस वी हैव एन एक्सेप्टेंस, रिस्की बैट होगा, 15 मिनट में नहीं ट्रेड करना, 9:15 टू 9:30 ट्रैप होता है, फर्स्ट 15 मिनट्स को छोड़ के करना। सो वी डोंट रियली हैव टू क्लोज बिकॉज वी आर ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। आवरली बायस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चलेगा, चांस लेंगे। गैप हो गया तो वेट वैसे भी करना है। So this is how you combine these methods that we are doing. Now Neo Wave perspective से देखते हैं। Neo Wave perspective, I'm not getting into what we did in ब्रह्मास्त्र, नहीं तो बाकी सब लोगों को समझ नहीं आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। नीचे एक ही इंडिकेटर 15 मिनट आवरली पे बाय में नहीं है, मतलब गड़बड़ है। करना क्या है यहां से? The overall pattern, this is very crucial. This I have not discussed earlier. The overall pattern completed C wave. I think it's forming a triangle. We are only in D wave. This is only going to be a D wave. This is not start of a fresh lifetime high from here. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, we are not headed for lifetime high levels. We have only completed wave C. We will complete, ये मेरी मंथली रिसर्च में मैंने पब्लिश भी किया था, we will complete our wave D, which can be somewhere around at least 50% retracement of this fall, which has already happened. So we are completing D. After completion of wave D, we will then head towards wave E. So exactly movement cap, maybe we will breach this line. Maybe it's too soon to say, it's too risky to say that and take that stand. We will go up and then we will consolidate. So we will form wave E. And then we will start another journey. Ideal date क्या है हमारा? September. Why September 2026? कौन बताएगा? टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, ऐसा नहीं लगता है? स्पेशली फॉर ट्रेडर्स, कब सुबह हुआ कब शाम हुआ पता ही नहीं चलता। टाइम जस्ट गोस। September 2026 looks so far away. It's not much far away now. The bigger 85-week cycle is in September 2026. So that is how we can behave. It's too soon to say, but that's what the Neo Wave is suggesting. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को Neo Wave क्या बता रहा है? Neo Wave के हिसाब से we might be in an 85-week cycle. This 85-week cycle is going to be due in September 2026, and that's how we can be looking at the overall trend of the market around here. Clear है? So daily पे क्या है? Weekly समझ में आया ना आपको? Every one of you? Now I am going on a daily time frame chart. Let me just also share it across सभी के साथ में on my Twitter. September should be bang on with this quarter. We'll देखते. So we are not completely out of the woods. IVs will collapse, volatility will collapse, options will start deteriorating value. People will start losing money in more range bound kind of a market. Strategy which worked until today will no longer work from tomorrow. I'm again repeating. Strategy that worked until today will no longer work from tomorrow. You have to tweak. That's why you need to know how to build a Ferrari rather than just driving it. Things are changing again. We are changing. Things are changing. Now it's the time to start where the markets will mean revert. You know what is mean reversion?
मीन रिवर्जन मतलब जानना है किसी को? व्हाट इज मीन रिवर्जन? सिंपल है. मीन मीन्स एवरेज. Reversion means market will move towards the average. That is what we call as a mean reversion. As simple as that. And yeah, so markets will mean revert. Let me go on the daily time frame chart now. The daily time frame chart shows my date as 27th of May. 27th of May is a very important date. ये डेट मैं लिख देता हूं आपको. Why 27th May is important? Because that's where we have the entire 55-day cycle going to be there again. So 27th May is crucial. Now, what is the wave pattern that we are looking at on 1 hour time frame chart? On 1 hour time frame chart, we completed this up move, got completed at the lows here. This rise was wave A. We completed wave B here. We are right now in wave C, which is going on. How do you project wave C? For projecting wave C, you can simply go here, trend based fib extension, project wave A, B को measure करना है, C को project करने के लिए. So projection 61.8%, 24,467 तक आ रहा है. So projection इस तरीके से कर सकते हैं. This is how we can project for wave C. Until when is this valid? We should not see a retracement of this rise below the level of 23,800. If this gap gets filled, we move below. C complete, D started. That will turn out to be maybe a diametric pattern or an X wave. So we might complete a C leg here. We might have an X wave here, and then we will again move forward. So overall undertone for the market is bullish. We will not sell it. Nifty has a tendency to take support at 38.2% of gap, which is here. And that's why I said today also that you should buy. Do you remember this gap? This gap was again retraced by 38.2%, support and up move. This gap after the up move got retraced again by 38.2%, support and up move. Can you see it's very similar to this? Similar fractal nature. Fractal nature मतलब क्या? Just see this portion. We went up, ठीक है? यहां से ऊपर गए, नीचे आए, गैप फिल किया, रिवर्स. यहां से ऊपर गए, नीचे आए, attempt to fill the gap and possibly reverse. So for me, this area should be a very important price action support, which is 24,040. I'm revealing all the secrets that I'm showing you in the tweets. 24,040, 24,970, and 24,400 was this area. You know, why do you hesitate to pull the trigger at the right time? होता है आपके साथ that you know this is the right point, you are still hesitating, and then you miss out, and then you kick yourself. यार ये करना चाहिए था, मैंने किया नहीं. किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है? Honest, be honest. कोई नहीं देख रहा है, मैं ही देख रहा हूं खाली आपको. So no one knows. क्या क्या क्वेश्चन है? सेटअप पता है, बट ट्रिगर पुल नहीं कर रहे, कन्विक्शन नहीं आ रहा है, एंड फिर ऐसा हो जाता है. देन यू किक योरसेल्फ, यार लेना चाहिए था, मेरे को पता था, बोला था, सीखा था, लेकिन नहीं किया. एंड देन व्हेन मार्केट रैलीड टुवर्ड्स 24,800, यार शिट मिस हो गया, एंड देन यू बाय पोजीशन एट 24,728. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट्स नॉट विथ यू. ये क्यों होता है? बिकॉज lack of confidence, lack of conviction, and lack of mental trust. You need to have trust in your method. You need to have trust in your process. If you have that, it will work. So simple in a nutshell, without much ज्ञान. मैंने आज थोड़ा psychological ज्ञान दे दिया आपको. I hope it's fine. In a nutshell, overall undertone will remain bullish until we don't fill the gap. 24,040 remains support.
23,970 crucial support, upside 24,400 hurdle, reversal catch करना है, above this aiming for 24,728. That's how it is. और आपके लिए लिख देता हूं क्योंकि याद अगर नहीं रहेगा, this is the level 24,040, 23,970, 24,728. इसके नीचे क्वेश्चन मार्क, below 24,040 question mark. So remember that below that level question mark. So we'll have to wait for opening. Acceptance वाला point याद रखना. You will love it. Fantastic, guys. So it has been any questions? I'm open for questions. Also, I'll take a very quick poll and link share करना Saturday का वापस से सभी के साथ में. And guys, मेरे टेलीग्राम पे फेक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है. टेलीग्राम पे नीचे एड आता है. यू डू नॉट क्लिक ऑन दैट एड. आई कांट स्टॉप दैट एड. मनी कैन नॉट बी डबल्ड. ओवरनाइट रिस्क एग्जिस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क, देन ओनली ट्रेड. Okay, I'm just taking a very quick poll. Which path to financial freedom? ये पोल मैंने लिया है त्रिशूल में. ऑप्शंस मंत्रा हमारा, आपको वीडियोस मिलेंगे ऑप्शंस के अगर आप त्रिशूल में अभी भी जुड़ना चाहते हैं. एलियट वेव और नियो वेव के साथ में ब्रह्मास्त्र या सूत्र वेव, which is going to be Neo Wave, Fibonacci forecast, Ichimoku cloud. It's a fantastic tool. If you can combine Ichimoku cloud for wave theory counting, I'm going to give you that in Sutra Waves 9-10th of May को. कौन कौन यहाँ पर है मेरे साथ जुड़ने के लिए? Just put it on the chat here. And any chances for Nifty index free classes? Saturday 11 बजे मैं करूंगा आपके साथ में. What if there is a gap down of 500 points of any Trump tweets? कुछ नहीं कर सकते आप. इवेंट है. ट्वीट वो कुछ भी करेगा, उसके मूड में आएगा वो ट्वीट करेगा, मार्केट गैप डाउन या गैप अप होगा. नथिंग टू डू. बिकम एन इंट्राडे ट्रेडर इन दिस काइंड ऑफ अ करंट मार्केट सिनेरियो. पोजिशनल ट्रेड्स रिस्की है. 24,040 निकल चुका है. यू कैन स्टिल ट्रेड पोजिशनली नाउ बट विद अ हेज. यू नीड टू नो हाउ टू हेज. सर योर सेशंस आर वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच. ओके फैंटास्टिक, आई एम ग्लैड टू नो दैट आपको सेशंस अच्छा लग रहा है. You are liking the sessions here. The link of mentorship offer, BMW offer is shared across with you all. First class today, Anurad. क्या बात है, आपकी पहली क्लास थी. कितने लोगों ने कितनी क्लासेस अटेंड की? There are webinars. Like the ease with which you explain. Thank you, Amit. कितने लोगों ने क्लासेस अटेंड किए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100, 200. आनंद भोसले जिनका हमारा हॉल ऑफ फेम था लास्ट, उन्होंने कहा था कितना 168, 170, मुझे याद नहीं है बट उन्होंने नंबर दिया था. उतनी सारी 178 वेबिनार्स अटेंड किए. आनंद भोसले आज है क्या यहाँ पे? उनका वीडियोस एक ही रिलीज किया है. डू यू वांट टू सी मोर ऑफ हॉल ऑफ फेम, हाउ traders are built, what was their reason for confidence, how did they change their style? Is it going to help you? Your daily tweet is like Lakshman Rekha. Okay, lovely. Fantastic. Tomorrow is Amavas Deepa. बिल्कुल, absolutely. अमावस है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है उसमें. उसका क्या करना है देखते हैं. प्राइस एक्शन देखते हैं. बिकॉज पूर्णिमा से रैली हुआ, अमावस्या से फॉल आ रहा था, कल भी अमावस्या है तो केयरफुल रहना. क्लोजिंग विल बी क्रूशियल. क्लोजिंग इज गोइंग टू बी क्रूशियल. सर हाउ डू आई रजिस्टर फॉर ब्रह्मास्त्र? लिंक शेयर किया आपके साथ में. यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट इन द पोल. माय टीम विल हेल्प यू आउट. और यू कैन सिंपली लिंक के ऊपर जाके कर सकते हैं. Any other question, guys? Fantastic. Then I think we are through for today. It was lovely talking to all of you. It has been fantastic. And the morning guidance are helping you. What is the best trade setup? Okay. Just want to ask before everyone leaves, which trade setups are you people using? Can you put down on the chat? Or if you're seeing this video later, can you put down in the comment? Which trade setup do you use? I want to know. I want to know more about you now. You know more about me. Which setups do you use? Setups as in, do you use case, Keltner channel, KST, or use wave theory, or you use time cycle, or you use simple RSI? You use price action. In price action में क्या exactly आप देखते हो? Or you use patterns? I want to know from you what exactly do you do and what exactly do you use? So bands use कर रहे हो. Okay, you use 20 EMA. Srinivas is using AK indicator. AK indicator
और कुछ की कोई भी कुछ जरूरत नहीं पड़ रही है। फैंटास्टिक। मेहुल एक के इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, लवली। प्राइस एक्शन प्लस 21 EMA, सुपर ट्रेन एंड 3 कैंडलस्टिक रूल, गैन सपोर्ट लेवल्स, सुपर प्राइस एक्शन प्लस आवरली डेली वीकली कैंडल्स, ओके, FLD, बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। बट इज इट combining this webinar live sessions that I do Friday at 4 के लिए Thursday at 4 जो किया, does it assist you better to take a much correct trading decision? Is it helping you? मेरा एक ही एम है, टू एम्पावर ट्रेडर्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। सो माय एम इज ओनली टू एम्पावर ट्रेडर्स एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड साथ ही में हम मेरा ऐप पे एक फ्री कोर्स भी है, ऐप का लिंक शेयर करना सभी के साथ में। यू कैन पॉसिबली डाउनलोड दी ऐप एंड ऑल्सो फ्री कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो अंडर द फ्री मटेरियल सेक्शन। You can just download it. There are paid courses also. I'm talking about this free material there, and you can just go and click on the free course. ठीक है, यहाँ पर if tomorrow closing is positive, the rally will continue. Let's see. पहले closing देखते हैं, opening hour देखना है दीपा. Let's see how the closing happens. Then yes, for 2 to 3 days we should then ideally continue. हमेशा आपका मार्गदर्शन का अलग ही ऑरा है। थैंक यू वेरी मच। What all tools are used in AK indicator? AK indicator बात करते हैं बाद में। हरप्रीत आप ब्रह्मास्त्र में है ना, हम उसमें बात करेंगे ना, याद दिलाना मुझे। ऐप का नाम भी लिखिए प्लीज, व्हेन यू शेयर द लिंक एटलीस्ट राइट डाउन द नेम सो दैट पीपल नो व्हाट्स द नेम इन केस द लिंक डजंट वर्क और दे वांट टू शेयर इट विद समवन। आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल इज द नेम ऑफ द ऐप। सो ऐप का नाम है आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल ऑन प्ले स्टोर, सो यू कैन डाउनलोड द ऐप। If anyone wants to repeat, सौरभ आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, my colleague will help you out with everything. Fantastic. Okay, guys, just before I leave, very quickly, I'm going to share across a disclaimer slide with you all. And Saturday को जुड़ना भूलना नहीं. It's going to be very different. We are going to discuss how to not get trapped in the market on Saturday in much detail with simple Elliott wave. If you want to become an Elliottician, you have to be there. We are semi-registered research analysts, and whatever we are doing here is purely for learning perspective. And investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. Keep that in mind. Quick disclosure, guys, and ensure you do not fall prey to wrong links, fake channels, and you have to be careful what you are doing. बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी कमिट कर रहा है पैसा डबल होता है, प्लीज ऐसा नहीं होता है। मेंटेन स्टॉप लॉस, मार्केट में रिस्क है तो इश्क है। सो मेंटेन स्टॉप लॉस एंड थैंक यू वेरी मच। रतीश आपका नंबर ड्रॉप करिए, माय कलीग विल हेल्प यू आउट विद दैट। लवली, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।